Assalamualaikum. My name is Hamza Ali. Today we are going to discuss about major challenges faced by pharmaceutical industry and their solution. First, I would like to briefly describe about pharmaceutical industry. As you know that pharmaceutical industry play a vital role in our life, including in this crucial condition when COVID come in our country. Pharmaceutical industry have greatly contributed to the increase in life expectancy of men and women around the globe. The pharmaceutical industry produce, develop, discover and market drugs or pharmaceutical drugs for use as medication to the administrated or self-administrated to patient. Now, for this presentation, we have selected the Sarle Company Limited located in Karachi and also listed in manufacturing pharmaceutical industry. Now, we are going to describe the major problem and their solution for this company. Now, I would like to call my other member to explain this major problem and solution in a better way. So please hold on. Savika here. I'm presenting one of the biggest challenges to pharmaceutical industries, that is demand forecasting. Demand forecasting is the process of making estimation about future demand over a defined period. In this era, due to high competition in markets of pharmaceutical industries, demand forecasting play a vital role to drive the competition and to get the competitive advantage among the competitors. It is considered to be one of the essential components in pharmaceutical industries that helps to stay ahead in the competition. Production of goods and its delivery to consumer at desired time is very challenging. So here demand forecasting help to balance and match supply to demand. The solution of efficient and effective demand forecasting lies in between production department and sales and marketing department. By analyzing internal and external data available, including consumer data, pricing data, stock exchange data, and others. Thank you. Another challenge faced by the pharmaceutical industry is price fluctuation assessment. In recent analysis shows that the big giants of the pharmaceutical industries are posed to witness of a tough time due to the price fluctuation. To counter that situation, the pharmaceutical industries need to develop or analyze the pricing structure to boost the profit margin. It also analyzes the shifting customer behavior due to the fluctuating prices, which is one of the biggest challenge faced by the pharmaceutical industries. To counter that situation, the product development department have an eye on the competitors' pricing strategy, so the companies may take proactive actions on that. This is Shahrukh Sayyed, and I'm going to telling you about the risk which is faced by pharmaceutical companies. This is the major problem. Actually, when company manufacture any product, especially pharmaceutical, so the risk is always associated with them. There is quality risk. जैसे कि इसमें बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं. क्वालिटी रिस्क हो सकता है, डिमांड एंड सप्लाई का रिस्क हो सकता है, और डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क हो सकता है. क्या क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड है? क्या एक उसका स्टैंडर्ड है? क्या उसका एक मयार है? क्या वो आपकी हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकती? क्या उसकी एक्सपायरी सही है? ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जिसको मैनेज करना किसी भी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है. डिमांड एंड सप्लाई का रिस्क होता है कि आपके पास डिमांड इतनी नहीं थी लेकिन आपने मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा कर ली, कंपनी को इसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़ता है.
डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस होता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रॉपर चैनल्स आपके पास नहीं है, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर चैनल्स नहीं है तो आप ओवर द वर्ल्ड प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे अपने प्रोडक्ट को। सो इसको मेजर करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है किसी भी कंपनी के लिए, और ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। सो इसके सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं, और फार्मास्यूटिकल कंपनी से इनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे वो किसी भी अपनी मेडिसिन का एक स्टैंडर्ड चेक कर सकती है, और उसी के सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो डिमांड एंड सप्लाई को भी चेक करती है किसी भी कंपनी की कि क्या डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, क्या डिमांड उतनी है जितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग उतनी हो रही है जितनी डिमांड है। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी वो फोकस करती है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन हमारा प्रॉपर है चैनल वाइज। आई एम गोइंग टू कवर दिस ऑल, सो मुझे इजाज़त दीजिए, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, आई एम गोइंग टू टेलिंग यू माई फ्रेंड टू कंटिन्यू प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। I'm presenting the challenge number 5, which is the customer journey analysis. Today, customer preference for the cost-effective products, which is a very serious cause of the pharmaceutical industries. So, pharmaceutical industries players to ensure that the new therapies are economically as well as clinically better than the alternative. Other than the new increasing the number of health issues, the pushing the players of pharmaceutical industries provide solution with the best qualities, but the conducting is of but the conducting of patient journey analysis is now challenging to understand the barriers, treatment drivers and disease flows. But the IT plays application are real world is provide analytical service. This is Rizwan Vora. I am going to talking about inventory management for pharma companies. जैसा कि इन्वेंट्री में ये बताया गया है कि फार्मा कंपनीज़ में कभी ऑन डिमांड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई ऑन डिमांड होती है। जैसा कि लास्ट ईयर जब कोविड का फर्स्ट केस हुआ तो अचानक से मार्केट से मास्क और सैनिटाइज़र गायब हो गए और उसकी डिमांड बढ़ गई। और अभी वैक्सीन के लिए पॉलिसी रिफॉर्म हुई तो वैक्सीन सब ने लगानी है तो वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई, या फिर ऐसी मेडिकेशंस होती है या शॉर्ट यूज़ नहीं होता तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। ये सारी चीज़ें मैनेज करना फार्मा के लिए चैलेंजिंग टास्क होता है। कंपनीज़ को चाहिए कि ट्रैक रखे कि कौन कौन से रेगुलेशन चेंज हो रही है, या तो रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रग की तरफ से तो कोई चेंजेस तो नहीं हो रही, और इसके साथ साथ क्वांटिटी को मेंटेन रखना और शॉर्टेजेस पर भी ट्रैक रखे। आईटी सॉफ्टवेयर्स हेल्प्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट में के आईटी सॉफ्टवेयर मदद करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के कोई प्रोडक्ट शॉर्ट ना हो। वो अगर कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो रही हो तो वो पॉपअप कर देता है सॉफ्टवेयर के ज़रिए सिस्टम में कि अब उसके ऑर्डर प्लेस करना। ये इन्वेंट्री में बहुत चैलेंजिंग टास्क होते हैं। थैंक यू। This is Amara Siraj, and so keeping in view all the mentioned challenges that were mentioned by my colleagues one by one, and we summed up all the possible solutions that any pharmaceutical company usually take or they must take to overcome these challenges that they face in their day-to-day routine. These were some of the basic, or I must say, some of the major challenges that any pharmaceutical company may face during their day-to-day times. As the pharmaceutical industry is becoming more complex and globalized, the sector must become more cost efficient. I must say, pharmaceutical companies must take vigilant actions, and they should respond to these challenges vigilantly, and timely and proper actions to overcome these challenges are very important to maximize their growth and to be more cost effective.
So, considering all the challenges that included demand forecasting, the pharmaceutical companies must follow the demand and supply rule, and they must be in line with the production and the sales team so that they can meet the demand and supply formula. They should have to check a very vigilant check on the inventory management, because mostly in the pharmaceutical sector the molecules may become obsolete, or the companies should import or export some of the material, so they should have a vigilant eye on the inventory levels as well. And the most important challenge that I would like to mention was the pricing strategy, that a pharmaceutical company must be very vigilant on that, so that they can just cope up with the competitive environment, and they should set their pricing strategy as per their competitors in the market. So these were the few challenges, and I'm hopeful that we have covered all these challenges in the most effective way. Thank you so much.